देवता बृहस्पतिर्देवता इन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरौषधय शान्ति वनस्पतये शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेवा शान्ति सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु ॐ विश्वानि देवसवितरधुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव इमा रुद्राय तवसेखपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मति यथा शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् एतं ते देवा सवितर्यज्ञं ब्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञापतिं तेन मामव ॐ मनो ज्योतिर्जुषता माजस्या बृहस्पतिर्यज्ञ इमं त्वनोतुरिष्टागं यज्ञगं समिमं ददातु विश्वे देवा संयमादयन्ता मोघं प्रतिष्ठा एष वे प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्र तेन यज्ञेन यजन्ति सर्वमेवा प्रतिष्ठितं भवतिम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम अहं जानी गर्भधमा त्वं मजासि गर्भधम् ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॐ सुमकश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायक धूम्रके दुर्गनाथक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यापते च नियादपे विद्यारम्भे विवाहेशा प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कतस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवरदं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते इति स्वस्ति वचनम्. Praise to Ganeshji, the remover of all obstacles. We ask Ganeshji's blessings to remove any obstacles in our puja, for our Purnima puja, and for the rest of our weekend ahead. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirviganam Kurme Deva Sarvakareshu Sarvada. Om Gam Ganeshaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayat. प्रेम से बोलो श्री गणपति भगवान की जय. ओम गम गणपतये नमः. आवाहनं समर्पयामि नमः गुम. ओम गम गणपतये नमः. आसनं समर्पयामि नमः गुम. ओम गम गणपतये नमः. पादयो पादयामि नमः गुम. ओम गम गणपतये नमः. हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि नमः गुम. ओम गम गणपतये नमः. मुख आचमनीयं समर्पयामि नमः गुम. ओम गम गणपतये नमः. दिव्यस्नानं समर्पयामि नमः गुम. ओम पया पृथगं पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाह पयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यम्. ओम गम गणपते नमः. पयस्नानं समर्पयामि नमः गुम. ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. ओम गम गणपते नमः. स्नानं समर्पयामि नमः गुम. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः शरीरङ्गे स्तुष्टवागुं स्वस्ति नोभिः विषेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृदश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः बृहस्पतिर्दधातु. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विरं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतमाम् अववक्तारम्
अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुच्चानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवाचोतरातात् अवादक्षिणातात् अवाचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वतस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयैलयमेषति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मस्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तरनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन दुलसितं तारेण रुद्रम् एतत् मनुष्वरूपं ककारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्तिरूपं बिन्दुरतररूपं नादः सन्दानां संमिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निचिद्गायत्रीचन्द्रः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणम् अभयं च वरदं हस्ते बिभ्राणामूषकध्वजं रक्तं लम्भोदरं शूर्पकर्णकं रक्तावाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टारोपरकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपये नमो परमतपते नमः परमतपते नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं बोल श्री गणपति भगवान की जय। ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिताः मूले तस्यास्थिते ब्रह्मा मध्ये मातृगणस्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपवसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो सामवेदो यतर्वण अङ्गेश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता ओ मानुस्तु केतनये मानो आयशो मानो घोषो मानो अश्विशरीरिषा मानो वीरान रुद्रभामिनो हरिष्मन्त्वा सत्वमित्वा हवामहे इति मंत्रेण कलशे गोमे स्पर्शं कुर्यात्। ॐ वं वर्णस्य नमः ॐ वं कर्वसर्वनेस्तो नाय नमः ॐ वं प्रचेतसे नमः ॐ वं स्वरूपिणे नमः ॐ वं अपाम्पते नमः ॐ वं तीर्थराजाय नमः ॐ वं करवाहनाय नमः ॐ वं जलाधिपते नमः ॐ वं पाशहस्ताय नमः ॐ वं अनिकर्मणि भूषणाय नमः ॐ वं वरणाय नमः नानाविमालपत्रपुष्पाणि समर्पयामि नमः गुं ॐ वनस्पतिरसोद्भूतो गन्ध्याढ्यो गन्धोत्तमा आग्र्या सर्वदेवानां धूपयं प्रतिगृहीताम् ॐ वं वरणाय नमः धूपं समर्पयामि नमः गुं ॐ साजं च वर्ति संयुक्तं वाहिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम् ॐ वं वरणाय नमः दीपं दर्शयामि नमः गुं ॐ वं वरणाय नमः दीपं दर्शयामि नमः गुं शर्कराकन्दकाध्यानि दरिक्षीराघृतानि च आहारं मक्षभोजं च नैवेद्यं प्रतिगृहीतां सर्वतीर्थासमायुक्तं सुगन्धिं निर्मलं जलम् आचमता मया दत्तं गृहाणा परमेश्वर ॐ वं वरणाय नमः जलाधिपते नमः ताम्बूलं समर्पयामि नमः गुं ॐ हिरण्यगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदामता शान्तिं प्रयक्ष मे ॐ वं वरणाय नमः दक्षिणं समर्पयामि नमः गुं
करलीगर्भादिसम्भूतं कर्पूराञ्च प्रदीप्तम् आरातिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवम् ॐ वं वरणाय नमः नीलाञ्जनज्योतिः समर्पयामि नमः गुं बोलो श्री वरुण भगवान की जय प्रार्थना to the Navgraha Devata. Om Brahma Murari Tripurantakari Bhanu Shashi Bhumi Suto Buddhascha Guru Shukra Shani Rahu Ketava Sarve Graha Shanti Kara Bhavantu Ganari Purakascha Shashidara Suto Budhur Gurur Bhagyo Sojanandana Rahu Shaketuscha Paranau Graha Kurvantu va purna manoratam sara. Prem se bolo Shri Navgraha Devata ki jai. We'll now all join together in Ma Abhishekam. Please, you're all invited to come up closer as we offer our prarthana and Abhishek to Mata. Purush Durga Mata ki jai. Offer our prarthana to Ma Durga, the bestower of all strength, of all Shakti. We ask her blessings on the occasion of Auntie Sita's birthday tomorrow. So we ask her to provide her with all the strength that she needs to continue to help us out with this temple. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namostute Jai Tvam Devi Chamunde Jai Bhutarati Harini Jai Sarvagate Devi Kalaratri Namostute. Prem se bolo Shri Durga Mata ki jai. Om Dum Durgaya Namah Avahanam Asanam Samarpayami Namahagum. Om Dum Durgaya Namah Padayo Padayami Namahagum. Om Dum Durgaya Namah Hastiyorgyam Samarpayami Namahagum. Om Dum Durgaya Namah Mukha Achmanyam Samarpayami Namahagum. Om Jata Veda Se Sunavama Soma Marati Yato Nidahati Vedaha Sannaha Parashadati Durgani Vishwa Naveva Sindhun Durtati Agnihi Tam Agni Varana Tapasa Jalantim Verochalim Karma Phalesha Jushtaam Durgam Devi Gvam Sharan Maham Parpadhe Sutarasi Tarase Namaha Agne Tvam Paranavyo Asman Swasti Dhirati Durgani Vishwa Pushta Prithvi Bahulana Urvi Bhavato Kayatanayaya Shamyoha Vishwani no Durgaha Jata Vedaha Sindhunna Nava Duritat Parishihi Agni Atravan Manasa Granano Osmakam Bodha Vitatanunam Pritana Jikitagwam Sahamana Mugram Agnim Huvem Paramastya Dastaat Sannaha Parasharati Durgani Vishwa Kshama Devo Ati Durtati Agnihi Pratno Shikamidyo Advareshu Sanacha Hosta Navyascha Sastihi Swancha Agni Tanupam Viprabhyasya Mubhyamcha Sobhagamaya Jaswa Mubhirjushtamayjo Nishiktantrave Indra Vishnu Nisancharim Nakasya Prashnamavi Sambasano Vaishnavi Loka Iha Madayantam
ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ दुं दुर्गाय नमः। ॐ दुं दुर्गाय नमः। ॐ दुं दुर्गाय नमः। ॐ शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीजापाशुभो भवेत्। न कवचं नार्गलः स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च निनाशो न च वर्चनं। कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्। अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयो निर्वपार्वती। मारणं मोहनं वश्य स्तम्भनो चातनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ग्लं हुं क्लीं जुंसः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वल हं स्लं शं शं फट् स्वाहा इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिने नमः केतपहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिने नमस्ते शुम्भहन्त्रेष्ठा निशुम्भासुरगार्दिने। जागृतं हे महादेवे जपं सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टरूपाय ह्रीङ्काली प्रतिपालिका क्लीं कानिकामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तुते। चामुण्डा चण्डिगातिश्चा ऐङ्कारी वरदायिनी विच्छिक्षा भयनानित्या नमस्ते मन्त्ररूपिणी। धां धीं धूं धुरतति पत्नीं वां वीं वुं वागरेश्वरी क्रां क्रूं क्रूं कालिका देवी शां शिं शुं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकाररूपिण्ये जं 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 बनार्दिने भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। ॐ अं कं चं तं तं पं यं शं वीं धूं ऐं वीं हं शं यजाग्रं यजाग्रं त्रोते त्रोते दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां ह्रीं पूं पार्वती पूर्णं कां किं कुं केचित्रिता सां सिं सुं सप्तशती दिव्ये मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्तिहेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीना सप्तशती पठे तदस्य जायते सिद्धिर्निरोधनं यथा। इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवारे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तामावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाणम् अश्वपूर्वारतमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपक्वे शिर्मा देवी जुषताम् अस्मितां हिरण्यप्राकारमाद्राजलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्तथां परमवर्णां तामिहोपक्वेश्यं चन्द्राप्रभासायशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरण्महं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तपवृक्षोत्तभिर्वा तस्य फलानि नन्तु मायान्तरायाश्च बाह्य अलक्ष्मीम् उपेतु मां देवसखा कीर्तिश्च मुनिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिन् रास्तेऽस्मिन् कीर्तिं हृदं ददातु मे। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूतम् अस्मृदं च सर्व निर्धुतमे गृहात् गन्धद्वारा दुरादर्श नित्यपुष्टा करीशिनीं ईश्वरी gwam सर्वभूतानां तामिहोपक्वेशीं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्द्रस्य मयि श्रीयतामिष कर्दमेन प्रजाभूतं मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासये मे कुले मातरं पद्ममानि आपहसन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसे मे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासये मे कुले आपहसन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसे मे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासये मे कुले आद्रा पुष्करीं पुष्टिं हेममालिनीं सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाव तामा आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं हिरण्यं विन्दे गावो दाशोश्वान् विन्देयं पुरुषानहं यशुचि प्रयतो भूत्वा जुह्यादा जमन्मः सुक्तं पश्य दर्शिता श्रीकामः सततं जपेत्। बोलो श्री दुर्गा माता की जय।
गंगे यमुनै चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सामर्मिषभो विश्वरूप छन्दोभ्यो जमृता सम्भवोव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवाधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ मेधा देवी जुषमान न आगाद्विश्वाची भद्रा सुमनस्य मान त्वया जुष्टानुधमान दुरुक्तान् बृहद्गदें वितते सुवीर्याः त्वया जुष्टा ऋषिर्भवति देवी त्वया ब्रह्मागतक्षीरुत त्वया जुष्टच्छित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधामेन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधा मे अश्विना बुभावात तां पुष्करसृज अप्सरासु चया मेधा गन्धर्वेषु चयन्मना देवी इं मेधा सरस्वती सामा मेधासुरभिर्विजिता स्वाहा आमा मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्य ऊर्ज्वस्ति पयसा पिन्वमाना सामा मेधासु प्रतीका जुषन्तां मयि मेधा मयि प्रजा मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधा मयि प्रजा मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो ददातु ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। बोलो श्री दुर्गा माता की जय। Shri Satyanarayana Swami ki jai. At this point, everyone, we're going to perform Bhagwan Satyanarayana Puja. As always, we say that the mantras of Swami Satyanarayana are very different. His puja itself is worshipped together. And so the way that we perform his puja is with everyone chanting together. You may not know the mantras, but many, many times what you'll hear as we're chanting the puja mantras is Om Shri Satyanarayane Namaha, calling the name of Bhagwan Satyanarayana. And so, everyone please come closer as a family puja. Please, if you can, come closer to sit closer with us. Om Shri Satyanarayane Namaha. Om Shri Satyanarayane Namaha. Om Shri Satyanarayane Namaha. Dhyayet Satyam Gunatitam Gunatraya Samanvitam Lokanatham Trilokesham Kaustubha Bharanam Harim Neelavarna Pitavastram Srivatsa Parabhushitam Govindam Gokulanandam Brahmadhyerapi Pujitam. Om Shri Satyanarayane Namaha. Dhyanam Samarpayami Namaha. Om Shri Satyanarayane Namaha. Avahanam Asanam Samarpayami Namaha. Om Shri Satyanarayane Namaha. Om Shri Satyanarayane Namaha. Om Shri Satyanarayane Namaha. Vyakta Vyakta Swarupaya Rishya Pataye Namaha. Maya Nivedito Bhaktya Arghayam Pratigrihita. Om Shri Satyanarayane Namaha. Arghyam Samarpayami Namaha. Padyam Narayana Namastesu Narakarna Vartaraka. Padyam Grahana Devesha Mama Saukyam Vivardhaya.
ॐ श्री सत्यनारायणे नमः पाद्यं समर्पयामि नमः गुं आचमन्यं मन्दाकिनीरस्ति यद्वारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव सम्यग् यच्छामि तं त्वया ॐ श्री सत्यनारायणे नमः आचमन्यं समर्पयामि नमः गुं पंचामृत स्नानं पञ्चामृतं देव ग्रहाण पुरुषोत्तम अनाथनाथ सर्वज्ञ जीवार्णं प्रणति प्रिया ॐ श्री सत्यनारायणे नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि नमः ॐ श्री सत्यनारायणे नमः नारायणाय ॐ नमो 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 नारायणाय गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॐ श्री सत्यनारायणे नमः स्नानं समर्पयामि नमः गुं ॐ श्री सत्यनारायणे नमः स्नानं समर्पयामि नमः गुं ॐ श्री सत्यनारायणाय नमः ॐ श्री सत्यनारायणाय नमः ॐ श्री सत्यनारायणाय नमः स्नानं समर्पयामि नमः गुं वस्त्र ॐ वीरसुप्तसमायुक्ते यज्ञसामसमन्विते सर्ववर्णप्रदे देवा वासासि प्रतिगृह्यताम् ॐ श्री सत्यनारायणे नमः वस्त्रं समर्पयामि नमः गुं ॐ श्री सत्यनारायणे नमः वस्त्रं समर्पयामि नमः गुं सर्वभूषादिके सोमे लोकल्लजानवार्दने मयोपपादिते तुभ्यं वासासि प्रतिगृहीताम् ॐ श्री सत्यनारायणे नमः वस्त्रं समर्पयामि नमः गुं ॐ नमो नारायणाय 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 ॐ नमो नारायणाय
ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीतदानेन प्रियतां कमलापतिः। ॐ श्री सत्यनारायणे नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ श्रीकन्धचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठः चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ॐ श्री सत्यनारायणे नमः। चन्दनं समर्पयामि नमः। ॐ श्री सत्यनारायणे नमः। कुङ्कुमं समर्पयामि नमः। कुङ्कुमं समर्पयामि नमः। ॐ रम्यं सुशोभरं दिव्यं सर्वसौख्याकरं शुभम् आसनं च मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर। ॐ मल्यादिनी सुगन्धिनी मालित्यादिनि वै प्रभो मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृहीताम्। ॐ श्री सत्यनारायणे नमः। पुष्पं समर्पयामि नमः। ॐ श्री सत्यनारायणे नमः। तुलसीपत्रं समर्पयामि नमः। Everyone is invited to offer some flowers. These are the 108 names of Satyanarayana Bhagavan. You can come a little bit closer. The names are very simple. They're 2/3 the same. Om Satya, and at the end, Namaha. So I'll say Om Satya Narayanaya Namaha. So after each time we say Namaha, we offer a few petals to Bhagavan Satyanarayana. You can chant along with us. Om Satyadevaya Namaha. Om Satyatmane Namaha. Om Satyabhutaya Namaha. Om Satyapurushaya Namaha. Om Satyanathaya Namaha. Om Satyasakshine Namaha. Om Satyayogaya Namaha. Om Satyajnanaya Namaha. Om Satyajnanapriyaya Namaha. Om Satyanidhe Namaha. Om Satyasambhavaya Namaha. Om Satyaprabhuve Namaha. Om Satyeshwaraya Namaha. Om Satyakarmane Namaha. Om Satyapavitraya Namaha. Om Satyamangalaya Namaha. Om Satyagarbhaya Namaha. Om Satyaprajapataye Namaha. Om Satyavikramaya Namaha. Om Satyasiddhaya Namaha. Om Satyachutaya Namaha. Om Satyaviraya Namaha. Om Satyabodhaya Namaha. Om Satyadharmaya Namaha. Om Satyagrajaya Namaha. Om Satyasamtushtaya Namaha. Om Satyavarahaya Namaha. Om Satyaparayanaaya Namaha. Om Satyapurnaya Namaha. Om Satyoshadhaya Namaha. Om Satyashashvataya Namaha. Om Satyapravardhanaya Namaha. Om Satyavibhave Namaha. Om Satyajeshthaya Namaha. Om Satyashreshthaya Namaha. Om Satyavikrarmane Namaha. Om Satyadhanvine Namaha. Om Satyamedhaya Namaha. Om Satyadhishaya Namaha. Om Satyahritave Namaha. Om Satyakalaya Namaha. Om Satyavatsalaya Namaha. Om Satyavasave Namaha. Om Satyameghaya Namaha. Om Satyarudraya Namaha. Om Satyabrahmane Namaha. Om Satyamritaya Namaha. Om Satyadevangaya Namaha. Om Satyachaturatmane Namaha. Om Satyabhoktre Namaha. Om Satyashashuche Namaha. Om Satyaristujataya Namaha. Om Satyendraya Namaha. Om Satyasangaraya Namaha. Om Satyasvargaya Namaha. Om Satyaniyamaya Namaha. Om Satyamedhaya Namaha. Om Satyavedhyaya Namaha. Om Satyapishaya Namaha. Om Satyamayaya Namaha. Om Satyamohaya Namaha. Om Satyasuranandaya Namaha. Om Satyasagaraya Namaha. Om Satyatapase Namaha. Om Satyasinghaya Namaha. Om Satyamrigaya Namaha. Om Satyalokapalakaya Namaha. Om Satyastithaya Namaha. Om Satyadikapalakaya Namaha. Om Satyadhunodhraya Namaha. Om Satyambujaya Namaha. Om Satyavakyaya Namaha. Om Satyagurave Namaha. Om Satyanyayaya Namaha. Om Satyasakshane Namaha. Om Satyasamvritaya Namaha. Om Satyasampradaya Namaha. Om Satyavahinaya Namaha. Om Satyavayave Namaha. Om Satyashikharaya Namaha. Om Satyanandaya Namaha. Om Satyadhirajaya Namaha. Om Satyashripadaya Namaha.
ॐ सत्यगुह्याय नमः, ॐ सत्योदराय नमः, ॐ सत्यहृदयाय नमः, ॐ सत्यकमलाय नमः, ॐ सत्यनालाय नमः, ॐ सत्यहस्ताय नमः, ॐ सत्यबाहवे नमः, ॐ सत्यमुखाय नमः, ॐ सत्याजिह्वाय नमः, ॐ सत्योदोष्ठाय नमः, ॐ सत्यनाशिकाय नमः, ॐ सत्यश्रोत्राय नमः, ॐ सत्यचक्षुषे नमः, ॐ सत्यशिरसे नमः, ॐ सत्यमुक्ताय नमः, ॐ सत्याम्बराय नमः, ॐ सत्याभरणाय नमः, ॐ सत्ययुद्धाय नमः, ॐ सत्यश्रीवल्लभाय नमः, ॐ सत्यगुप्ताय नमः, ॐ सत्यपुष्कराय नमः, ॐ सत्याधृदाय नमः, ॐ सत्याभाववतारकाय नमः, ॐ सत्यगृहरूपिणे नमः, ॐ सत्यप्रहरणायुधाय नमः। श्री सत्यनारायण अष्टोत्तरशतनामावली सम्पूर्णम्। ॐ वनस्पतिरसोद्भूतो गन्ध्याढ्यो गन्ध उत्तम आघ्र्या सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीताम्। ॐ श्री सत्यनारायणे नमः। धूपं समर्पयामि नमः। ॐ साजं च वर्चसंयुक्तं वह्नायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः। ॐ श्री सत्यनारायणे नमः। दीपं समर्पयामि नमः। प्रसाद। ॐ घृतपक्वे हविष्यानं पायसं च शर्करं नानाविधं च नैवेद्यं विष्णु मे प्रतिगृहीताम्। ॐ श्री सत्यनारायणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो नारायणाय। 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 सर्वपापहरं दिव्यं गङ्गेयं निर्मलं जलम् आचमनं मया दत्तं गृह्यतां पुरुषोत्तम। ॐ श्री सत्यनारायणे नमः। आचमनं समर्पयामि नमः। ॐ श्री सत्यनारायणे नमः। आवाहनम् आचमनं समर्पयामि नमः।
लवङ्कर्पूरसंयुक्तं ताम्बूलं सुरपूजितं प्रीत्या गृहाण देवेश मम सौख्यं विवर्धय। ॐ श्री सत्यनारायणे नमः। ताम्बूलं समर्पयामि नमः। चतुर्विता समायुक्तं घृतेन च सपूजितं नीराञ्जनेन संतुष्टे भगवते च जगत्पति। ॐ श्री सत्यनारायणे नमः। नीराञ्जनज्योति समर्पयामि नमः। यानि कानि च पापानि जन्मन्तरे कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा परे परे। ॐ श्री सत्यनारायणे नमः। नीलाञ्जनज्योतिः समर्पयामि नमः। Final prarthana to Satyanarayana Swami. Om Satyanarayanam Devam Vandeham Kamadam Prabhum Leelaya Vidita Vishwa Yena Tasmai Namo Namaha. Dhyayet Sada Savitramandala Madhyavarti नारायणः सरिसजासने सन्निविष्टः केयूरवान् कनकुण्डलवान् किरीटिं हारिहिरण्मय घृतपूर्वचङ्कचक्र। ॐ श्री सत्यनारायणे नमः। ॐ श्री सत्यनारायणे नमः। ॐ श्री सत्यनारायणे नमः। ध्यानं समर्पयामि नमः। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। Before we go into our Satyanarayana Katha and the reveal of Ma Durga, we'll have some bhajans and kirtans in the meanwhile. Lakshmi Narayana Mata Lakshmi Narayana
बोले श्री दुर्गा माता की जय. Everyone, let's please stand as we offer our Aarti to Ma Durga. जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते. ओम ब्राह्मणो समुखमासीर बाहुराजनिकृत उरुतरसे द्वेष पद्भ्यां शूद्र अजायत. ओम दुम दुर्गाय नमः. ओम दुम दुर्गाय नमः. ओम दुम दुर्गाय नमः. ओम दुम दुर्गाय नमः. ओम दुम दुर्गाय. ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्य अजायत मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायत. ओम दुम दुर्गाय नमः. दीपं दर्शयामि नमः. ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्. ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्. ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्. ओम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्ता स्वमीश्वरं. शुभं भवतु कल्याण भवतु मंगलम भवतु. बोली श्री दुर्गा माता की जय. शरणागतं मया स्वागतं मया. शरणागतं मया स्वागतं सुस्वागतं. शरणागतं Durga Mata ki Jai. Everyone is now invited to bring your prasad to Charhavi to Ma Durga. सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ, हे प्यारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ, सुर की देवी सरस्वती
दुर्गा माता की जय। ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाये सततं नमः। नमः प्रकृत्य भद्राये नियताः प्रणताः स्मतां। रौद्राय नमो नित्याय गौरीधात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चिन्दरूपिण्ये सुखाय सततं नमः। कल्याणे प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः। नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मे सर्वाणि ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणे ख्याते तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः। अतिसौम्यातिरुद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठाय दिव्ये कृत्ये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति षद्विता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
नमस्ते नमस्ते नमो नमः नमस्ते 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 नमो ओ नमस्ते नमो नमः नमस्ते नमो नमः नमस्ते नमो नमः नमस्ते नमो नमः। प्रेम से बोलो श्री दुर्गा माता की जय। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। Our Satyanarayana puja will not be complete, of course, without Satyanarayana Vrat Katha. So let's all please join together in singing the glories of the Satyanarayana Katha. Jai Jai Narayana Narayana Hari Hari Swami Narayana Narayana Hari Hari He Mahima Sabse Nyari Nyari Hari Hari Jai Jai Narayana Narayana Hari Hari Swami Narayana Narayana Hari Hari Jai Jai Narayana Narayana Hari Hari Swami Narayana Narayana Hari Hari O ekadane misharanye ऋष्या शोनकादया प्रप्रचुन मुनिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेना तपसा किं वा प्राप्यते वाचितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः तथा स्वामहामुने नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरे लीला सबके न्यारी न्यारी हरि हरि तेरे लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। Once upon a time in the Naimisharanya forest, on the banks of this forest was gathered Shaunak Muni, Sutji, and thousands of other rishis and munis. And they were gathered there to listen to the glories of Bhagwan. And they began to ask Sutji Maharaj, who was the most knowledgeable of them all, many, many questions. Once they asked Sutji, what is a way that people on earth can become free of sufferings, become free of doshas, that we can benefit ourselves? What is something that we can do? And Sutji, of course, he tells them that Narad Muni once asked the same question to Bhagwan Vishnu. He tells the rest of the Munis that the same question has been asked by Narad Muni a long, long time ago. And the answer of what Bhagwan Vishnu gave Narad Muni, of course, was the answer of Satyanarayana puja. Bhagwan Vishnu told Narad Muni that if people on earth were to perform Satyanarayana puja, then many things will happen in their life. Their life will get better. They will come out of poverty. They will come out of unhappiness. And at the end of their life, if they continue to do the worship, they will gain moksha. These are very strong words from Bhagwan Vishnu. You know, in our Hinduism, we say that we have to do many, many things and live a very good life in order to gain moksha. It is not so easy as doing one puja and gaining moksha. Bhagwan Vishnu, but he tells Narad Muni that if people on earth conduct this puja, they do this puja with all of their bhakti,
and they continue to worship me in the form of Satyanarayana Swami, then their life will become blessed. That they, at the end of their lifetime, they will gain moksha. This is the glories of Satyanarayana puja. And the reason that we read the katha, the reason that we read the stories of Satyanarayana Swami is because it tells us why we should continue to do the puja. Once Bhagavan Vishnu, up in the heavens, he saw that this Brahmin was begging door to door. This is chapter 2 of Satyanarayana Vrat Katha. He sees that this Brahmin is struggling in life. He's begging from door to door, and he's living daily only off of what he begged in the previous day. He's living only off of what he begged that day. That is all he had in life. And he continues wandering door to door to keep on surviving. Bhagavan Vishnu, he takes the form of an elderly Brahmin, and he stops the younger Brahmin one day. And he says, "What are you doing? And why are you begging?" The Brahmin says, "I do not have anywhere else to go. I do not have anything else to do. This is how I maintain my lifestyle. This is how I can survive." Bhagavan Vishnu, in the form of the elderly Brahmin, he tells the younger one that he should perform Satyanarayana puja. And not only does he tell him this, he teaches him what to do. In the verse it says that he teaches him exactly how to perform this puja, all the ingredients that he needs, all the steps that he needs to go through in order to complete the puja of Satyanarayana Katha, Satyanarayana Vrat. And the Brahmin, he thinks to himself that he'll listen to the advice of this elderly Brahmin. He goes home and he prepares everything that he needed to do. And the following day he performed this puja. He invited many people around him from the village, and together they all worshipped Satyanarayana Swami. After that, the Brahmin's life changed. He became well off, not wealthy, but he became someone who did not have to beg for a living. He became happy because of this. And at the end of his lifetime, whatever Bhagavan Vishnu said has come true, that he has gained moksha. Bolo Shri Satyanarayana Swami ki jai. I wanted to ask everyone, why is it that Bhagavan would take a form to approach someone else, to approach one of us, humans, and tell them to pray to God? Why would Bhagavan Vishnu, Bhagavan Satyanarayana come down to tell someone else, to tell one of us, that we should pray to him? This sounds a little bit strange, right? What is the necessity for Bhagavan to do this? Do you think that it is because Bhagavan needs our prayers and that is why he is telling the Brahmin this? No. Do you think that Bhagavan needed anything from the Brahmin? Any fruits? Any dakshina? Any flowers for Bhagavan to survive? No. So why is it that he told this younger Brahmin to perform the puja to himself? If God was so merciful, we can say that Bhagavan, maybe he, out of mercy, came to this Brahmin. He saw that he was struggling, and he gave him this way to come out of this poverty that he was in. But then I ask, if Bhagavan is so merciful, then why didn't Bhagavan just give him wealth? Why didn't God just give him everything that he needed so that he didn't have to beg? And the result would have been the same, that he was not poor anymore. You see, many times we need to be nudged in the right direction in life. We do not always know the way to a better path. And even if that way is to Bhagavan, and it may seem weird to us, strange to think that Bhagavan would tell us to worship him, that he would come to us directly and steer us onto the right path in life. This, of course, is the best result.
How many times in the Bhagavad Gita did Bhagavan Shri Krishna tell Arjuna that he is God and that everyone should worship him? The reason for this is not selfish. The reason is so that in our itihasa, in our scriptures, in our historical texts, that this knowledge be present. Not even for that Brahmin, not even for Arjuna, but for you and I to pick up where these people left off, to understand what we ourselves should do. Because without that, if Bhagwan just gave them wealth, if Bhagwan solved all their problems, took away all of their doshas, then what would happen? We would not learn anything in our life. How many times is it that in a class we try to answer the question? We raise our hand and try to answer the teacher's question, but we struggle to find the exact answer. And the teacher gives us a little hint. The teacher gives us a little hint to steer us in the right direction so that we can get that exact answer that they are looking for. This is the way that Bhagwan tried to steer us, or tries to steer us, and provide us with hints in life as to what to do as we are struggling. But let me ask you another question. Presently in your life today, do you need any more hints to reach God? Think about your life. Think about the tools that you have, the resources that are there for you. Do you need anything else in order to reach Bhagwan? At this point in time in the Katha, many, many years ago, over 2,000 years ago, Arjuna, over 3,000 years ago, after the departure of Bhagwan Shri Krishna on earth, the world began to suffer. This is when this Katha took place. The world began to suffer without his presence. But we have mass printed a Bhagavad Gita. We have shared it to millions of people across the world. And in that Bhagavad Gita itself is Bhagwan Shri Krishna. In our murtis we have God. In our mandirs like this, where is he not? And so I ask again, where or what do you need as a hint in order to find God in this life? As tough as it is, we need to simply just follow the rules. Follow the word of Bhagwan, what he says to do. It is written step by step in the Bhagavad Gita. It is written in our Satyanarayana Vrat Katha. But yet we question so much of the worship that we do in the first place. We question the puja that we're going to do before we even try to do it. If we do not know about it, many times we'll question, are we supposed to be doing this? And when we do know about it, we still question it. Will this give me any benefit? Whether we are doing the right thing at the right time, we're questioning all of these. And we question so much that we do not get to do the worship, the puja at all. Many people today is Friday, yes, many people today are celebrating Ganeshji Visarjan as the last day of the celebration before Pitri Paksh begins tomorrow. This is the normal way to celebrate, is to celebrate before Pitri Paksh. We cannot celebrate Visarjan afterwards because we do pujas. And so everyone comes together and they celebrate Visarjan either before or today itself as the last day. Many, many people choose to celebrate Visarjan on this day. Majority of people celebrate on the day before or the day before Purnima ends. But because we have done Visarjan earlier, we have done Visarjan on last Sunday, does this mean that our puja and our worship is incorrect? No. This does not mean so. First of all, Ganeshji Visarjan is not a religious occasion where we're missing an auspicious period. So it is not something that we have to do within a certain time frame based on auspiciousness. And also,
The puja for Ganeshji Visarjan, if you looked this puja up online, you would find all the information that you need to show you that the Visarjan is done on many, many days. 1.5 days after Ganesh Chaturthi, 3 days, 5 days, 7 days, and then the 10 days. Any of these times are acceptable because you're performing Ganeshji Puja, and no matter what you do, as long as you're doing it within the right time period, blessings will be there. As long as it is after Ganesh Chaturthi and before Pitri Paksh. So are we incorrect because we haven't done it on the 10th day? No. But many people who didn't join us, many people who did not come to the Visarjan with us, may have used this reason as to not come. Maybe it is that they've thought this in their mind that no, Ganesh Visarjan is on Friday. Why are we doing it on the Sunday? So this is not the correct day. We should not come on the Sunday. I hope none of us did that. I'm just saying that I hope this is not the case. But I know that this thought must be there. Why is it that people are celebrating Visarjan on a different day than we did? But because of that thought, and I hope this is not the case, but because of that thought, I hope that no one missed out to perform the Visarjan at all. I hope that everyone still had a chance to perform the Visarjan, regardless of which day you celebrated on. Our message today, of course, is to always look to learn more about Bhagwan, to learn more about God, about our pujas, to look to take part, and at the same time as we're learning, of course, so that we can get the blessings of Bhagwan before we try to validate everything in life. I always like to say, question a lot of things, question everything, because that is how we learn. But when we see good things that are happening, take part as well. When we see good things that are happening in mandirs, take part, because the good that can happen is the blessings that you will receive. And very, very rarely is there any downside to that. Bolo Shri Satyanarayana Swami ki Jai. I wanted to say that Bhagwan has made this path very, very simple for us. It's not easy, but if we follow this path, then we are sure to reach Him. Today, I'm very, very happy to be in company with Pandit Bhuvanji, Vrindaji, Bhumikaji. These are, of course, no strangers to all of us, and they have assisted with our chorusing, they are our Gandharvas, as we say, our celestial musicians that make our music so beautiful. Please give them a round of applause, everyone. I'm glad to have them back. And you know, they're international artists now. They've gone to Guyana, they're intercontinental artists. They went to a different continent to perform and sing and spread their bhajan and the kirtanam. So thank you so much for being here. I missed you guys a lot. We had good backup, but I missed you guys so much, and I'm glad you're back. Of course, with Guruji as well. Bolo Shri Satyanarayana Swami ki Jai. Thank you so much, everyone. Let us now please all stand for Aarti. Om Yani Kani Cha Papani Janmantare Kritani Cha Tani Sarvani Nashyantu Pradakshina Pare Pare. Om Jai Lakshmi Ramana Swami Jai Lakshmi Ramana Jai Lakshmi Ramana Swami Jai Lakshmi Ramana Satyanarayana Swami Satyanarayana
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव We all bow. Om Gurur Brahma Guru Vishnu Gurudevo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namah Asutoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Shanti 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 Harihi Om Bole Maapati Mahadev Ki पवनसुत हनुमान की सिया भज रामचंद्र की श्री सत्यनारायण भगवान की श्री दुर्गा माता की श्री सत्य सनातन धर्म की सबको जय जय सीताराम. Jai Sitaram everyone. Thank you all so much for being here and joining with us. We'll see you Sunday morning for our Sunday service.